Moving on, we'll be understanding the 8 sections of GIPS, which is Global Investment Performance Standards. We'll be understanding all the 8 sections one by one. First one is fundamentals of compliance. So if you are wanting to comply with GIPS, you need to tell what is your company doing, right? Uska type kya hai? Is it a partnership firm? Is it a company? The type of firm that you have, all the locations that you are present at, and different kind of information that defines your firm. So you need to first define your firm, and then moving on, provide the GIPS compliant reports to all the clients and prospects. आप अगर बोल रहे हो कि you are complying with GIPS, तो आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी. All of those should be complying with GIPS, and वो रिपोर्ट किसको जाना पड़ेगा? Clients and even prospective clients को आप वही दिखा सकते हो. Complying with applicable regulations and laws. See, if you are complying with GIPS, that doesn't tell you to not comply with the regulations and laws. वो तो करना ही है. This is over and above what you're complying with those. So वो तो एक explicit लिख दिया गया है कि आपको comply तो करना पड़ेगा even with the existing regulations and laws. And last one is presenting information that's not misleading and false. You cannot show any information that is misleading or false. That is even ethics as well as set by the standards. So the first part of, or the first section of GIPS is fundamentals of compliance. Fundamentals of compliance में आप अपने company को define करते हो. You provide all the GIPS compliant reports only to your clients and prospects. Then you comply with the regulations and laws, and you also show information that is not misleading and false. Second part of GIPS is input data and calculation methodology. See, input data जो कर रहे हो, आप जो data डालने वाले हो, उसके basis पे output आने वाला है. So you need to make sure that the inputted data is consistent. आप जो information provide करने वाले हो system में, so as to understand whether they should form a composite or not, we'll be understanding what is that. But आप जो information डाल रहे हो उसके basis पे output आने वाला है. Garbage in garbage out वाला information रहता है. So you need to make sure that the input data is all consistent and the calculation methodology is all uniform. ठीक है? आप जो जो information देने वाले हो अपने client को, that is the output from inputs and the calculation that you do. So input जो है वो consistent होना चाहिए, एक ही type का input आना चाहिए हमेशा, and the methodology that you follow should be uniform. एक ही method आप बार बार apply करोगे. So input data and calculation methodology is the second section जो आप पूरी तरह से बताते हो कि how it is consistent and uniform. Third part is composite and pooled fund maintenance. It is very important to understand what is composite. See, all the discretionary individual portfolios, आपके पास बहुत सारे portfolios है of various clients. जो भी client portfolio similar है उसको आप एक group बना देते हो जिसको बोलते हैं composite. So all the individual discretionary portfolios representing similar strategy, mandate or objective are grouped together to form a composite. आप वो composite को एक fund भी बोल सकते हो जिसका performance आप show करने वाले हो to your clients and prospects. So let's try to dismantle the whole definition into various parts. What is individual? मतलब बहुत सारे clients हैं, उनका एक एक portfolio देखा और वो कौन से किससे match कर रहा है, that we saw. So individual means बहुत सारे हमने अलग अलग देखा. Discretionary. So there are two types of portfolios, discretionary and non-discretionary. Discretionary portfolios are those where a fund manager has all the leeway of taking any decision that he wants. उसने एक strategy बना दिया है कि मैं इस strategy के हिसाब से invest करूंगा. Now which company to invest in and which not is all discretionary to fund manager. Non-discretionary क्या होता है? जब आपका client बोल देता है यार मेरे को ये companies में invest नहीं करना है, या फिर आप जो भी invest करोगे मैं बोलूंगा वैसे वैसे करना. So where the discretion of fund manager is not paramount, उसको हम बोलते हैं non-discretionary accounts.
सो हम जब कॉम्पोजिट बनाते हैं तो हम खाली डिस्क्रिशनरी अकाउंट्स का बनाते हैं बिकॉज वी वांट टू शो द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड विच इज दैट ऑफ फंड मैनेजर्स. तो फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन जहां लगा उसको ही आप कॉम्पोजिट बना पाओगे. सो ग्रुपिंग इंडिविजुअल डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज रिप्रेजेंटिंग सिमिलर स्ट्रैटेजी. देखो अगर आप डिफरेंट फंड चला रहे हो, लेट्स से यू आर डूइंग वन फंड फॉर इंटरनेशनल इक्विटीज, वन फंड फॉर स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज, तो दोज आर टू कॉम्पोजिट्स, टू स्ट्रैटेजीज. तो अगर वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है तो उसको एक कॉम्पोजिट मत बनाओ, उसको दो कॉम्पोजिट बनाओ. सो द individual discretionary portfolio should represent either similar strategy or objective or mandate, right, or club together. So अगर वो सारा definition को fulfill कर रहा है तो उसको आप एक composite बना सकते हो. And the second one is pooled fund maintenance. So what a mutual fund does, वो बहुत सारे लोगों से pool कर लेता है पैसा and then they manage. So if that pooled fund also meets this definition of सेम स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव एंड मैंडेट, तो वो उसको भी एक कॉम्पोजिट बना सकते हैं, राइट. सो दैट्स कॉम्पोजिट एंड पूल्ड फंड मेंटेनेंस. देन द फोर्थ सेक्शन इज कॉम्पोजिट टाइम वेटेड रिटर्न रिपोर्ट. फिफ्थ इज कॉम्पोजिट मनी वेटेड रिटर्न रिपोर्ट. सिक्स्थ इज पूल्ड फंड टाइम वेटेड रिटर्न रिपोर्ट. सेवेंथ इज पूल्ड फंड मनी वेटेड रिटर्न रिपोर्ट. सो कॉम्पोजिट और पूल्ड फंड क्या है वो तो हमने देख लिया, बट टाइम वेटेड और मनी वेटेड क्या है ये आपको कैलकुलेशन अभी नहीं आएगा. इट विल बी देयर इन योर लेवल 2 एंड लेवल 3. सो विल बी डिस्कसिंग दैट इन द दोज लेवल्स. अभी आपको खाली ये समझना है कि व्हाट आर द अदर 4 पार्ट्स. आपको अगर ये याद नहीं भी रह रहा है तो इट्स ऑफ नो प्रॉब्लम. दे वुडंट आस्क व्हाट इज सेक्शन सी और सेक्शन 5. सो आपको ऐसे याद नहीं रखना, बट जस्ट रिमेंबर दैट देयर आर 8 पार्ट्स टू इट, वेयर इन 4th, 5th, 6th, 7th is all about the performance return report, which are categorized on the basis of time weighted and composite or pooled fund. And the 8th one is GIPS advertising guidances. So there are some guidances that GIPS provides कि अगर आप ये बोल रहे हो कि you are compliant with GIPS तो आप कैसे performance दिखा सकते हो, what you can do and what not while advertising GIPS. If you are advertising something else which is not related to GIPS, तो ये standard नहीं लगेगा. Mind you, this will only apply if you are telling your clients and prospects anything related to GIPS in an advertisement form. And apart from this 8 sections, the standards also talk about verification. So while you are compliant with GIPS, आपने सब कुछ standards को apply कर लिया, हो सकता है you may be right or wrong. So the standards encourages the firm to get third party verification. ठीक है, ये खाली encouraged है, mandatory नहीं है. Second is उनको third party से verify करना पड़ेगा, वो internally verify नहीं कर सकते. And the fourth one is जो भी third party verification कर रहा है वो दो तरीके का verification करेगा. One is whether all the requirements are fulfilled or not. And second one is whether there are set processes and procedures to follow GIPS. ठीक है, so those are the 2 parts that verification is done about. So I hope GIPS is now clear. There are 8 sections. First is fundamentals of compliance, जहाँ पे कंपनी क्या करती है, क्या बोल सकती है, क्या नहीं बोल सकती है, उसके बारे में बात हुई. Then second is all about the input data and calculations, जहाँ पे वो consistent और uniform होने चाहिए. Then we talked about the composite and pooled funds. Then we talked about the 4 types of performance return reports, and last one was about the advertisement that the company can do in terms of GIPS. With that, we have completed with Global Investment Performance Standards. Thank you.